Last class, we have discussed about the different terms related with the illumination. Okay. What was the terms that we have discussed in the last class? It's about what is illumination, what is candela, what is illumination flux, intensity, okay, utilization of coefficient, okay, different factors that we are taking into consideration during design of the lighting schemes, and the MSCP, okay, the reflecting factors. So various terms we have discussed in the last class. Okay. Now today I'm going to explain the law of illumination. Okay. I think you have heard about this law of illumination. Okay. There are basically two different laws. The first one is the inverse square law. Okay. Inverse square law हमारा क्या कहता है? It says that according to this law, the illumination of a surface is inversely proportional to square of distance between the source and surface. Okay. इसका मतलब है illumination क्या होगा? किसी भी surface पे अगर आप किसी लाइट को ऑन करते हैं और कहते हैं कि ये हमारा टेबल है, वर्किंग प्लेन है हमारा, यहाँ पर illumination क्या होगा इस लाइट सोर्स का? So that illumination you can define, okay, with the help of this inverse square law. ये लॉ कहता है कि जो illumination होगा उस वर्किंग प्लेन पर due to a light source, that is inversely proportional to the square of the distance between the source and the surface. ठीक है, अगर बल्ब को ऑन करते हैं किसी रूम में तो उस बल्ब से जो टेबल है, जो वर्किंग प्लेन है, जो सरफेस की बात कर रहे हैं, उस बल्ब से उस सरफेस का डिस्टेंस क्या है, उस डिस्टेंस का स्क्वायर जो भी होगा वैल्यू, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इल्यूमिनेशन. यही कहना है इनवर्स स्क्वायर लॉ का. द इल्यूमिनेशन ऑफ अ सरफेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सरफेस. सिंपल. ठीक है, ये कह रहा है E is inversely proportional to 1 upon distance square. ठीक है. If the distance between the source and the surface is sufficiently large, okay, so that the source can be regarded as a point source. अगर डिस्टेंस सोर्स और सरफेस के बीच में इतना ज्यादा है कि अगर सरफेस पर हम लोग बैठ करके देखें कि सोर्स कहाँ है, तो वो एक पॉइंट सोर्स की तरह अगर दिख रहा है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि जो इल्यूमिनेशन है E that is equal to I divided by distance square. Okay. In that case, illumination is I divided by the distance square. इस चीज को हम लोग देखते हैं, एक केस कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है, फिर देखते हैं कि ये लॉ फुलफिल होता है या नहीं होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ. एक कंडीशन हम लोग लेते हैं. कंडीशन हमारा क्या है?
हमारा कंडीशन है कि ये एक पॉइंट सोर्स है S, ठीक है, ये S एक पॉइंट सोर्स है, यहां से R डिस्टेंस पर एक सरफेस है जिसका कि एरिया A1 है, इस सरफेस का एरिया A1, और at a distance of 2R from the point source there is another area, another surface having area A2. Okay, so according to inverse square law क्या होना चाहिए? Illumination at this surface having area A1 is inversely proportional to 1 upon R square. यही है ना? Illumination is inversely proportional to the distance between the source and the surface square. Okay, so as per the inverse square law, for this particular surface, illumination should be inversely proportional to 1 upon R square, and for the second surface having area A2, illumination should be inversely proportional to 1 upon 2R square, that is 4R square. Okay, तो ये चीज प्रूफ होता है या नहीं, हम लोग इसको एक छोटा सा डेरिवेशन करके देखते हैं, so that we can prove that this inverse square law satisfy the general condition. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग इस फर्स्ट सरफेस को कंसीडर करते हैं, ठीक है, जिसका कि एरिया A1 है, और हम लोग कंसीडर करते हैं कि सोर्स जिसका कि इंटेंसिटी है I ल्यूमेंस पर स्टेरेडियन, ओके, और सॉलिड एंगल है ओमेगा, दिस ओमेगा इज द सॉलिड एंगल एंड I lumen per steradian is the intensity. Then the total flux on this area will be how much? Total flux on the area A1 is equal to I into omega, this much lumen. Okay, simple formula, I into omega, and the solid angle will be equal to how much? The area divided by the distance square. If area is A1 and the distance is R, so solid angle omega in this case will be A1 divided by R square. Okay, the total flux is I into omega, and the omega is A1 divided by R square. So we can write the total flux, which is equal to I into omega, is equivalent to I into, just replace the value of omega by A1 divided by R square. So this is phi1, total flux on this area. Okay, total flux on the area A1, this is phi1. So illumination, how we can write this illumination on the surface A1, this is equal to total flux divided by area. Okay, that is the illumination as per the definition. E1 at this surface is phi divided by A1. So when we put the values of phi, okay, then we will get the value of illumination E1 at a surface 1 is equal to I divided by R square. Okay, that means it satisfies the inverse square law. Okay, E1 is inversely proportional to the distance square. Okay, अब हम लोग सेकेंड सरफेस को कंसिडर करते हैं, तब क्या होगा? Second surface which is at a distance of 2R from the source, ठीक है, यहां पर अब फ्लक्स क्या होगा इस सरफेस पर? I into omega, where the value of omega is area of this surface, that is A2, divided by the distance of that surface from the point source, the square of that distance, that is A2 divided by 2R square. This is omega for area A, for the surface 2 having area A2. Okay,
and the total flux is I into omega. So we can write the flux at this surface is phi 2, and the value of phi 2 is I into omega. This is the value of omega. So we will get I into A2 divided by 4R square. So as per the definition, what we can write for E2? E2 is equal to total flux phi 2 divided by the area A2. Okay. So phi 2 divided by A2 is equal to how much? I divided by 4R square. This is what we are getting here. So this is nothing but I divided by the whole square of 2R. Okay. So again, this satisfies the inverse square law. So this proves that if we consider any area, okay, if we consider any area the same manner, the illumination is inversely proportional to the square of the distance between the source and the surface. Okay. तो ये हमारा है लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन का फर्स्ट लॉ. एनी डाउट? ओके. सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है? सेकेंड लॉ दैट इज द लैम्बर्ट कोसाइन लॉ. Lambert cosine law. Lambert, the name of the scientist who has investigated this law. Okay. So according to this law, the illumination of a surface varies directly as the cosine of the angle between the normal to the surface and direction of incident light. Okay. ये लॉ कहता है कि illumination क्या होगा? Illumination E is directly proportional to cos theta. Cos of theta, where theta is the angle between the normal to the surface and direction of incident line. ठीक है. सपोज ये एक देखो, ये दो सिचुएशंस है. इस फिगर में क्या है? इस फिगर में फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो जो इस सरफेस का जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, इस सरफेस का जो 90 डिग्री डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में ये फ्लक्स भी फ्लो कर रहा है. ठीक है. दैट मीन्स दोनों के बीच का एंगल 0 है. फ्लक्स और इस सरफेस का परपेंडिकुलर दोनों सेम डायरेक्शन में है. नॉर्मल टू द सरफेस मेक्स 0 एंगल टू द फ्लक्स एक्सिस. ये हमारा एक सिचुएशन है. इस सिचुएशन में क्या होगा हमारा? E is equals to phi divided by area. ठीक है. phi by A under normal condition. But if there is an angle between the flux axis and normal to the surface, okay, यहाँ पर देख रहे हो अगर इस सरफेस का नॉर्मल अगर ये डायरेक्शन है और फ्लक्स का एक्सिस पैरेलल टू द नॉर्मल नहीं है इस सरफेस के, so there will be an angle. Okay, ये जो भी एंगल होगा इसका cos of that angle, ठीक है, जो cos थीटा होगा, cos of this angle, illumination जो है इसके प्रोपोर्शनल होगा. E will be proportional to cos of थीटा. यही हमारा कहता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ. इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हो. सपोज किसी एक कमरे में, ठीक है, कोई एक लाइट सोर्स है जो कि बिल्कुल टेबल के टॉप पर है. ठीक है. टेबल रखा हुआ उसके ठीक ऊपर में वो लाइट सोर्स है रूफ टॉप पर. तो उसका टेबल का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फ्लक्स आ रहा है लाइट सोर्स का. ठीक है. तो इस केस में थीटा 0 है. लेकिन अगर उस लाइट सोर्स को टेबल के टॉप से हटा करके
फ्रंट साइड में अगर रख दे किसी वॉल पर, उसको फिक्स कर दे, तब एक एंगल बनेगा लाइट सोर्स का जो फ्लक्स होगा और टेबल जो है उसके बीच में, ठीक है? तो वो यही एंगल कह रहा है, ठीक है? फ्लक्स एक्सिस एंड द नॉर्मल टू द सरफेस, देयर इज some angle having some value, okay? So this illumination E is equal to phi by A into cos theta according to Lambert cosine law. तो ये दो लॉ है जिसको कि हम लोग लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। अगर इन दोनों लॉ को कंबाइन करें हम लोग in order to find out the illumination in general case, okay? In general case अगर illumination किसी एक सरफेस पे फाइंड आउट करना हो ड्यू टू अ लाइट सोर्स, तो इन दोनों लॉ को हम लोग कंबाइन करते हैं, तब फिर क्या आता है देखते हैं, ठीक है? So illumination at a point, how we will calculate illumination at a particular point? अगर ये लाइट सोर्स है, ठीक है, और ये हमारा सरफेस है, सरफेस पे दो पॉइंट को कंसिडर किया गया है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। पॉइंट P जो कि सॉरी पॉइंट Q जो कि इस लाइट सोर्स के बिल्कुल नीचे है, परपेंडिकुलर, एंड पॉइंट P which is at an angle of theta, ठीक है? ये नॉर्मल टू द सरफेस हो गया, ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस एंड द फ्लक्स लाइन इज दिस, सो देयर इज एन एंगल थीटा, ठीक है? So let P be the point on a plane surface at a distance d, ठीक है? ये जो distance d है from a source of light S and the source is at a height of h meter from the surface, ठीक है? तो अब हम लोगों को निकालना है कि illumination क्या होगा at point P and at point Q due to this light source. This is the question. Okay, this is what we have to find out. Under different condition, what will be the illumination? What is the illumination at this particular point? Just at the perpendicular and at a particular point P, which is creating an angle of theta to the normal of the surface. ठीक है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन हमारा क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन कहता है EP is directly inversely proportional to the distance square, और डिस्टेंस क्या होना चाहिए? वो डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द सरफेस, सोर्स और सरफेस के बीच का डिस्टेंस क्या है? d. So EP is inversely proportional to d square according to first law of illumination, inverse square law, and according to second law of illumination, EP is directly proportional to cos theta, where theta is the angle between the normal to the surface and the flux line. So when we combine both equations, okay, we will get EP is directly proportional to cos theta divided by d square, or we can write it as EP equal to I by d square into cos theta, where I is the luminous intensity of the source. What is the luminous intensity of this source? Okay, multiply with that value, then you will get the illumination at this particular point P. Okay, and what will be the value of this cos theta? From the simple mathematics, this cos theta is equal to h by d. So you can replace the value of d in this equation, then you will get illumination at point P equal to I divided by h square into cos q theta. Okay, or you can simply find the value of illumination from this point also. It depends that what are the parameters available with you. Okay, that is not an issue.
So you will get the illumination at this particular point, at point P. Now you have to find out the illumination at point Q. Okay. So what you will do? The illumination at this particular point, according to this formula, this equation, if the value of theta is equal to 0, then you will get the illumination at this particular point. If this flux line will be along the line this, okay. So just put the value of theta is equal to 0. Okay, you will get the illumination at point Q. Okay, so in this way, you can calculate the illumination at any particular point due to a particular light source. समझ में आ गया? या कुछ पूछना है तो इसमें बताओ. अदरवाइज फिर आगे प्रोसीड करते हैं. ठीक है सर. हाँ बोलो. सर इसमें जो फ्लक्स लाइन है उसको एज्यूम किया गया है कि एच के डायरेक्शन में ही सारे फ्लक्स लाइन मतलब वो निकल रहा है, यही ना सर? अगर फ्लक्स लाइन डी के डायरेक्शन में भी निकल रहा होगा तो फिर थीटा लेना तो कोई जरूरी नहीं है. फ्लक्स अगर डी के डायरेक्शन में, यस सर. तो ये जो लाइट सोर्स है, ये लाइट सोर्स को कंसिडर किया हुआ है कि ये हमारा इक्वल ऑल डायरेक्शन में इक्वल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है. ये जो सिचुएशन है समझ लो कि एक तरह से ये सर्कुलर लाइट सोर्स है which illuminates equal flux in all direction. That is the ideal case, standard case. Okay. ठीक है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई एक बल्ब है जो कि डायरेक्टली यहाँ पर इसको वर्टिकल पोजीशन में रखा हुआ है या हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है. शायद यही सोचने का मतलब है ना तुम्हारा. यस सर. इसका लाइट सोर्स जो है ये स्टैंडर्ड कंडीशन को यहाँ पर कंसिडर किया गया है कि इट इल्यूमिनेट्स द फ्लक्स इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन. ठीक है. इस पर एक न्यूमेरिकल भी देखते हैं हम लोग छोटा सा. इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी काफी आते हैं एग्जाम में. एक न्यूमेरिकल पहले देखते हैं जो भी लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, कुछ बेसिक डिफिनेशंस और फिर लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन से रिलेटेड. फिर आगे उसमें प्रोसीड करेंगे. स्क्रीन दिख रहा है? यस सर दिख रहा है. हाँ. तो भाई कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड है. अगर यूनिट्स और डिफिनेशंस को समझ रहे हो तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. देखो फर्स्ट एग्जांपल में हमारा क्या है. अ 200 watt lamp takes a current of 1.2 ampere. It produces a total flux of 2860 lumens. ठीक है. एक 200 वोल्ट का हमारा लैंप है, ठीक है, जो कि 1.2 एम्पियर करंट ले रहा है और ये फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है 2860 lumens. So you have to calculate the MSCP of the lamp and the efficiency of the lamp. So it's simple.
that the voltage is given, current is given, and the flux is given. So you can find out the MSCP. What is this MSCP? Mean spherical candela power. Okay. So mean spherical candela power क्या होता था हमारा? Total flux in all direction. Okay. All direction में कितना हमारा total flux है? एक होता था MHCP. Horizontal direction में कितना हमारा horizontal plane. Okay. So ये MSCP है in all direction. Total flux कितना है? So that is 2860 divided by 4 pi. So simply you will get the value of MSCP. And in order to find out the efficiency of the lamp, so how you will calculate the efficiency? Efficiency is what? Output by input. And what is output? The lumens, the total flux, which is illuminating from the light source, that is 2860, that is the output in terms of the lumen, divided by the input power. What is the input power? The watt is not given here. It is given the voltage and the current. So input is 200 into 1.2. Okay. So when we solve, you will get the value of the lamp efficiency, and the unit will be lumens per watt. Okay, that is the unit of efficiency. यूनिट का स्पेशल ध्यान रखना जब इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो. एक और न्यूमेरिकल देखते हैं छोटा सा. A room with an area of 6 into 9 meter is illustrated by 10 is illustrated by 10 80 watt lamps. ठीक है, एक रूम है 6 into 9 मीटर का डायमेंशन है, 80 वॉट के 10 लैंप उसमें ऑन किए गए हैं to illuminate the room. Okay? The luminous efficiency of the lamp is 80 lumens per watt, and the coefficient of utilization is 0.65. Then find out the average illumination. कैसे निकालेंगे? एरिया दिया हुआ है हमारा इस रूम का, that is 6 into 9. Okay. It means 54 meter square. It is written here meter, it should be meter square. Okay. So 54 meter square is the area of the room. What is the total watt? Number of bulb is 10, and the each bulb has wattage of 80 watt. Okay, that is the rating. So total wattage is 800 watt. So the total flux which will be emitted by all the 10 lamps will be equal to how much? 800 into 80, since each lamp is illuminating 80 lumens per watt. Okay. So 80 lumens into the total watt. So what is total watt? 800. So 80 into 800, that is equal to 64,000 lumens. This is the total flux which is emitted by all the lamps which is switched on in a room. And the coefficient of utilization is given. Coefficient of utilization is given as 0.65. It means 65% of the total flux is reaching to the working plane. जो हमारा वर्किंग प्लेन है, अगर कोई टेबल है जहां हम लोग वर्क कर रहे हैं, उस टेबल पर पूरे जो 10 बल्ब को ऑन किया गया है, उससे जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है 64,000 लुमेंस, उसका सिर्फ 65% है उस वर्किंग प्लेन तक पहुंच रहा है. रेस्ट आर ऑफ नो यूज. So the flux reaching to the working plane is 64,000 lumens into the coefficient of utilization, that is 0.65. So you will get the value of the flux which is available at the working plane, that is equal to 41,600. So illumination is what? You have to find out the average illumination. Illumination is the flux divided by the area. So
it is 41,600 divided by the area, which is 54 meter square. So you will get the value of illumination. Okay. Simply जो भी यूनिट्स है, ठीक है, उन सबको भी अगर माइंड में रखोगे तो जो भी पैरामीटर्स दिए हुए रहेंगे क्वेश्चंस में, उससे सिंपल निकाल सकते हो। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट दो न्यूमेरिकल में तो कोई इशू नहीं है, दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। ओके, थर्ड वन दैट इज आल्सो सिंपल, जो अभी डेरिवेशन बताया गया था और फिर दोनों लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन को कंबाइन किया गया था, सेम उसी प्रोसेस से यहाँ भी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, टू पावरफुल स्ट्रीट लैंप्स ऑफ 1000 कैंडला एंड 800 कैंडला एज्यूम यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ भी देखो वही चीज लिखा हुआ है, एज्यूम यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शन। दो लैंप है जिसका की हमारा दिया हुआ है 1000 कैंडला एंड 800 कैंडला, L1 एंड L2, जो कि इक्वली फ्लक्स इल्यूमिनेट कर रहा है इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, दे आर माउंटेड 12.5 मीटर above the road level and are spaced 25 मीटर apart। ठीक है, ये 12.5 मीटर रोड लेवल से इसका हाइट है, and they are 25 meter apart. This is the distance between both light source L1 and L2, 25 meter. Okay, find the intensity of horizontal illumination produced at a point on the ground in between the lamp post. Okay. In between the lamp post, let us consider this midpoint, okay, which is at a distance of 12.5 meter from both ends, and just below the lamp post, that is at point A and at point B. Okay, तो हम लोग को इल्यूमिनेशन निकालना है कहाँ, पॉइंट A पर, पॉइंट B एंड एट पॉइंट C। सेम हमारा मेथड होगा, ठीक है, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन में जो हम लोग देखे, यहाँ पर हम लोगों को थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो डिस्टेंस तो पता है, वैल्यू ऑफ I ये भी पता है, so we have to find out the illumination at point A, at point B and point C. Okay, so first of all let us see that what will be the value of the illumination at point C. Okay, यहाँ पर क्या होगा illumination due to this light source, what will be the value of illumination at this point, and the illumination at point C due to the light source L2, इन दोनों का जो सम होगा वही होगा यहाँ पर टोटल इल्यूमिनेशन, यही है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूला, 1000 डिवाइडेड बाय दिस 12.5 स्क्वायर इनटू 1/√2 उसका क्यूब। ठीक है, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं ना, ये डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है बेसिकली, एक ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा और इसका वैल्यू क्या होगा, सिंपल मैथमेटिक्स से निकाल लेंगे। We know the value of this 12.5, 12.5, all at 12.5. So you can simply find the value of this distance and just put the value in the formula. Okay, 1000 illumination due to lamp 1 and illumination due to lamp 2. Just add both the values. Okay, 1000 divided by this much and 800 divided by this much. Okay, that is the distance. तो ये हमारा आ जाएगा 4.07।
ये तो सिंपल है। सिमिलरली अगर निकालना है इल्यूमिनेशन एट पॉइंट ए, तब हम लोग क्या करेंगे, ये डिस्टेंस पता है, इस लाइट सोर्स के कारण इल्यूमिनेशन इस पॉइंट पर क्या होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 12.5 स्क्वायर, सिंपल, cos थीटा इज 0, सॉरी cos थीटा इज 1, द वैल्यू ऑफ थीटा इज 0, ओके सही। ड्यू टू light source 1, the illumination at point A is 1000 divided by 12.5 square, plus the illumination due to this second light source, which is equal to how much, 800 divided by this distance square, okay. So you can find out the value of this distance, this theta 2, okay, as shown in this figure. You know this distance and this distance, so you can easily find out this one, okay? तो ये distance निकाल लेना, और फिर ये कितना हो जाएगा, sorry it is written here 10,000, it should be 1,000, okay. So it's 1,000 divided by this 12.5 square, plus due to the second light source 800 divided by that distance, okay, this one, this distance 800 divided by this distance square. So in this way you can find out the illumination at point A. Similarly you can find out the illumination at point B, that is EB, okay. So what will be the value at this particular point, कितना होगा कोई बताओ, कैसे निकालेंगे, 800 by 12.5 का स्क्वायर प्लस प्लस 1000 by 12.5 का स्क्वायर इंटू थीटा 1 का होल क्यूब, cos थीटा 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो सिंपली इसी तरीके से हम लोग किसी भी सिचुएशन के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको ट्राई करके देखना, सॉल्व करके, उससे वैल्यूज इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन एंड द बेसिक टर्म्स व्हिच आर रिलेटेड विद द इल्यूमिनेशन सिस्टम।